Gisha, how are you? Good? So, good, all of you. And today I'm quite excited. Why? New subject, new kind of approach of geography, right? I'm good, Vagisha. Thank you, Pinky. I'm good. So, new approach, new subject. That is the thing. Then, before I start about these perspectives, recently, 2 days ago, in Delhi, at the airport of Delhi, there was an event which happened. That event, okay, this is what we can call it as something like what do you say, a micro phenomena. Okay, a micro type of a disaster, micro storms. So that's what has happened on Delhi 2 days ago. Now, what happened? There were the some of the equipments which are there as part of the airport handling. You tend to find a ladder which you tend to climb the airport, climb in the near the runway, and when then you go into the flight. जब भी आप ना एयरपोर्ट में as you approach the flight, there would be a ladder. You need to climb the ladder and then you need to enter into the flight. याद है? And there were such kind of instances because of micro storm and all, huge winds. There were such kind of things are running, could not be controlled. They're moving across the landscape there, and that hit another flight, and that flight has got right. Yeah. So these kind of ladders, because of the wind and all, they hit another flight, and there were some kind of economic challenges. Now, what are they called as? Anyone, do you aware? This is what happens. These things happen because of something called as microstorms. What is that? Microstorm. See, the airport is just half an hour from my place, 40 minutes from my place as of now. Okay. There is nothing of any kind of a change in the weather at my home, whereas in the airport, it was severe. There was not even a single drop of water at my home. लेकिन एयरपोर्ट में इतना तेज बारिश, मजबूत winds, right, impacting this is what we call it as in the modern era microstorm. Microstorm क्यों होते हैं मालूम? Heavy winds. They originate because of powerful sources of heat. याद रखना एक डायलॉग. Powerful storms originate from powerful heat sources. Powerful storms originate from powerful heat sources. जहां पर ज्यादा हीट रहता है, ज्यादा कन्वेक्टिव प्रोसेस रहता है, and that leads to variety of things which I call it as atmospheric instability. Now, what happened here? There was some kind of a convective shower, there was some convective air rising, and this air rises rapidly, cools down, and it also sinks in that way. So there was a huge amount of cold air which sunk from the high latitudes into the from the higher altitude regions of the atmosphere into the low grounds. On the ground, they have created micro level of differences. Because of it, the winds rush in and they create havoc for a few areas for a shorter time period. These are what we call it as micro storms. और ये मॉडर्न एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी में भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज,
जितने बार हवा के बारे में एंड ऑल दे हैव सो मच वेदर एबिलिटीज, they don't have the technologies to observe these phenomena. Why? Because you cannot identify the micro level storms. The meteorological department did not give any kind of a warning to them, and that things happened. These are what we call it as micro storms. Have you understood, Vagisha, Pinky? Have you understood this? करंट अफेयर से कनेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा प्रिपरेशन में. दैट्स वेस आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस पॉइंट. डिड यू गेट माय पॉइंट? सिंपल. मोर हीट, कन्वेक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन के प्रोसेस के कारण देयर वाज ह्यूज एयर विच हैज राइजन. वही कन्वेक्टिव प्रोसेस, इतना ज्यादा वार्म एयर ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाता है. ए गुड कॉलम ऑफ एयर ठंडा होने के बाद नीचे गिर गया. ठंडा हवा एयर, कोल्ड एयर नीचे गिरने के बाद हाई प्रेशर होता है. दो ग्राउंड लेवल में हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस के कारण हवा जाता नहीं, भागता है. दैट्स व्हाट मोर विंड स्पीड्स, दैट्स व्हाट क्रिएट्स द स्टॉर्म्स. दैट इज व्हाट यू हैव सीन इट इन द recent region. Those are what we call it as micro storms. Anyhow, let's come back to perspectives. Perspectives. Perspectives in human geography. Very, very important theme in preparation. ज्योग्राफी ऑप्शनल का मजा यहां हम ले सकते हैं. हाँ, यही बात बोल सकता हूं मैं उल्टा. कुछ लोगों के लिए ये मजा है, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे दिक्कत भी है. वंस अगेन, ड्यूअल अप्रोच. पर्सपेक्टिव्स, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड द कैच ऑफ दिस सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी. दैट्स व्हाट विल ट्राई टू सी, राइट? It is simply how human geographers or geographers in general interpret the events around us in a different way, right? So that is what is perspectives. We anyhow will discuss that. Why it is important? Why it is important? Firstly, you tend to get around 30 to 45 marks in paper 1. डायरेक्ट क्वेश्चंस. अगर ये टॉपिक, अगर आपको चॉइस भी रहता है ना, अगर ये टॉपिक आपको पिक करके अच्छे से आंसर लिख दिया ना, you will fetch more marks also, because you are giving the impression to the examiner that geography का main theme में you are having the grip. So that's why it is very important. That is one. But the most important thing for you to score 150 and above in paper 1 and also in paper 2, very, very important aspects is connecting this topic is part of your interlinkages. Connections, right? Connecting the theories with respect to the contemporaries. जो भी आप लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हंगर के बारे में, बाद में डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे. पॉपुलेशन में पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस किए थे. ऑल दोस एस्पेक्ट्स you can give multiple viewpoints, right? So those connections to real world problems, those interlinkages, these applications are having a huge role to play, which will help you to score 150 plus in paper 1. हाँ, पेपर 1 में हम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए. अगर हम मेंस लिख रहे हैं, मतलब ही हमारे पास थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. उसके बाद हमारे पास कनेक्शन रहना चाहिए, इंटरलिंकेजेस रहना चाहिए. ज्योग्राफी itself is what is called as synthesis. It is not one particular subject. It is a synthesis of multiple
subjects. So those are the aspects which you need to understand, and this is what is covered as part of the perspectives. Do you have any doubt? Any one of you, do you have any doubt? Do you have any doubt? No, right? See, पर्सपेक्टिव्स जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अगले 10 दिन, ओके, आई विल ट्राई टू टेक इट फ्रॉम द थर्ड डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स. वी विल टेक सम आंसर्स, वी विल ट्राई टू सी हाउ टू अप्रोच एंड गिव यू वंडरफुल एग्जांपल्स सो दैट आपको हमेशा ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. ताकि करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, कनेक्शन करना आसान होगा. टॉपिक्स में जो भी करंट जो भी टॉपिक्स सब लोग पढ़ेंगे आपको कनेक्शन करना आसान हो जाएगा. अगर वो हो गया ना, हमारा प्रिपरेशन ना एक न्यू फेज में चला जाता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इफ आई आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव्स? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव्स? What do you mean by perspectives? Approach angle of viewing, says Vagisha. Right. Now, if I ask you something like urban poverty, what is the reason for urban poverty according to Karl Marx? According to Karl Marx, urban poverty means what? Urban poverty is a product of what? Result of capitalist exploitation. Marx says it is a result of कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर एक ह्यूमनिस्टिक एंगल से देखेंगे, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज ह्यूमन सफरिंग? क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं ना, ह्यूमन सफरिंग, राइट? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वी आर हैविंग अ पर्सपेक्टिव. Multiple people having multiple viewpoint. Agar if you ask similarly, you take a glass of water, I drink water, आप क्या देखेंगे? ग्लास हाफ फुल है देखेंगे, ग्लास हाफ एम्प्टी देखेंगे? दोनों सही है ना? ऐसे नहीं है कि both are wrong, both are real, both are true. What you are seeing is what matters. That is what is perspectives, right? Then you talk about what you talk about migration. Why do people migrate? Why do people migrate? मार्क्स क्या बोलता है? मार्क्स बोलता है माइग्रेशन इज बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज. एक सोशलिस्टिक क्या बोलता है? इट रेफर्स टू मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, राइट? It is an individual decision which allows the people to migrate for different reasons. Push factor हो सकता है, pull factor हो सकता है, जो भी हो. Whatever. What is the whole essence of this topic? You need to see that this is nothing but a particular way of viewing and interpreting the relationship. Perspectives is what? A particular way of
viewing and interpretation of events. A particular way of viewing and interpretation of events. Say in a geography, I would say a relationship between humans and environment. I can give you an example. Right? That is what is called as perspective. In other words, same reality, different lenses. Similar reality. You are having different lenses. तो आउटकम क्या होगा? तो आउटकम क्या होगा? सिमिलर रियलिटी, एक ही रियलिटी है, उसी को हम लोग अलग अलग लेंस से देख रहे हैं, आउटकम की क्या होगा? डिफरेंट आएगा. So these are what we can call it as multiple perspectives. Right? Multiple perspectives. So I can say glass half empty, half full. एक पानी का बॉटल देख लीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर, आधा पी लीजिए. आप क्या बोलेंगे? आप आधा बचा हुआ बोलेंगे या आधा खत्म हो गया बोलेंगे? That is what is the thing, half empty, half full. That's the perspective. So like that, whatever you tend to see in multiple viewpoints, that is what we can call it as human geography. Right? Now, the essence of perspectives, why perspectives is important is it views things in a different way. That is the essence. What is that? It studies this phenomena in different way. Studies phenomena in different way. It will help you in terms of how the geography has evolved. Helps in evolution of geography, especially human geography. So very, very important. Say example, you study about, for example, what I can call it as, there is a evolution of some topics which will help you understand how things have changed over a period of time. ये क्या क्या मैं कह सकता हूं, आज के जमाने में ज्योग्राफी का मतलब क्या है? You study more from the paradigm of environmental process, environmentalism. Am I right? एनवायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण नुकसान में है, इसी के लिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा. इज दैट द अप्रोच? लुक एट हाउ Aravallis have seen, we have seen that. Look at how we have seen the dimensions with respect to the Great Nicobar project, the concerns. सेंट्रल इंडिया में इतने ट्राइबल्स है, उसके पर्सपेक्टिव क्या है? All those kind of things. Am I right, all of you? Am I right? राइट. सो आपको, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एवरी 10-15 डेज में क्या इवेंट्स ज्यादा हमको लाइमलाइट में आते हैं? वन सच थीम is all about environments, disasters, climate change. So what can I say? एक geographical approach पढ़ना होता है to understand these phenomena. Desertification क्यों हो रहा है?
रिसोर्सेस क्यों खत्म हो रहे हैं, राइट? व्हाई आर यू फाइंडिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? All those dimensions becomes the heart of the preparation process. That is how you have to prepare. That is nothing but a strong paradigm, a strong perspective of following in subject, right? अगर ज्योग्राफी में मैं क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा फोकस कर दिया, क्या मैं कह सकता हूं आई एम मोर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ मीटेरोलॉजी? वुड यू एग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? अगर क्लाइमेटोलॉजी के बारे में ज्यादा पढ़ लिए, can I say that we are entering into the domain of meteorology? अगर मैं रॉक्स के बारे में ज्यादा पढ़ लिया, can we say that we are entering into the domain of geology? अगर एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका एज स्ट्रक्चर क्या है, उनका सेक्स रेशियो क्या है, एंड ऑल आई स्टडीड इन डिटेल फ्रॉम दैट रीजन only about sex ratios and all those dimensions, can we say that I am entering into mostly as a demographer? लेकिन ज्योग्राफी क्या करता है? ज्योग्राफी स्टडीज स्पेस ऑफ दिस ए रीजन स्पेस from multiple perspectives and aligns everything. Synthesis. It's like the biryani, the pulaus. क्या होता है बिरयानी और पुलाव में? सारे वेजिटेबल्स जो भी, मैं तो वेज बिरयानी खाता हूं, हाँ ये मत कहना कि वेज बिरयानी भी एक बिरयानी होता क्या है। सच में वेज बिरयानी भी एक चीज होता है। आई एम ए वेजिटेरियन, सो इन वेज नाउ there are multiple things which align, which make it the dish very beautiful. It's not just only one particular vegetable which you are utilizing. Am I right? So that is what we can call it as synthesis, right? हम सबको ये क्यों पसंद होता है? Because of the same thing, right? Vegetables all making it tastier. आपको मैगी का मेन प्रोडक्ट है, you have that noodles, you have that masala which they provide. बॉयल करके भी सीधा खा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इतने वेजिटेबल्स वेराइटीज हम लोग काट के उसमें डालते हैं। हाँ, कुछ लोग मैं देखता हूं कि एग मैगी भी पसंद करते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू आर एडिंग वैल्यू, सिंथेसाइजिंग दिस। ज्योग्राफी भी वही है, इट इज ए सिंथेसिस. So it will help you in understanding all these kind of dimensions, right? So that is what is the theme. What happened is the entire video is coming up or only half? What is happening to the session? Let me check. Is the entire screen coming up, all of you? Yeah, it is there. Not an issue. Fine. Right. So right. So studying events in different way helps in evolution of geography. It is very useful in contemporary application. Contemporary applications, right? For example, climate change ही है. Climate change. Now what should we do? Should we say that nature controls the society and we stop that thing? आप एक चीज बताता हूं मैं. बांग्लादेश में देयर इज द गंगा डेल्टा, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो भी है ना, वो डेल्टा क्लाइमेट चेंज के कारण that area, there is a significant section of Bangladesh area which can reduce, which can be impacted by the
इंक्रीज इन द सी लेवल, मतलब सी लेवल बढ़ने के कारण यहां पर कोस्टल एरियाज में सी लेवल राइज के कारण फ्लडिंग हो सकता है, पूरा एंक्रोच करके वो रीजन सी के पार्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट शुड वी से, ये क्लाइमेट चेंज कह रहा है, ये नेचर कंट्रोल करता है, नेचर विल डिमांड द सोसाइटी एंड द व्यू पॉइंट्स, क्या ये कह के छोड़ दे, या ये सोचूं कि मैं कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको मैं कम करूं, ये सोचूं, और वी कैन से दैट, और ये कहूं कि हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज चाइना एंड डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका एंड देन द यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारा नुकसान फैल रहा है, क्या हमको क्रिटिसाइज करते रहें, ये करें, या क्या करना चाहिए? या अगर हम लोग इंसानियत की तरफ से वल्नरेबल कम्युनिटीज को सोच के उनके व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स व्हिच आर इंपैक्टिंग, if you study only from that, will you leave that? What will you do? Ultimately, as a geographer, your approach is bring solutions, whether it is nature, whether it is technology, whether it is a humanistic viewpoint, whether it is criticizing the actual things, whatever, right? So that is what you need to understand. Sir, example बता रहा हूं मैं, because of global warming, climate change, you are tend to seeing there is a possibility that you might see that because of sea level rise, there might be coastal encroachment by the sea or coastal flooding. Now, how to handle? Agar there is an approach which we're going to study called as humanistic approach. Humanistic approach ना ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखेगा, तो अरे यार यहाँ पर कुछ ट्राइब लोग हैं, कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ वुमेन हैं, दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल, दे आइडेंटिफाई व्हाट वल्नरेबल सोसाइटीज। हाँ, कभी कभी कुछ रेडिकल लोग भी रहते हैं, अरे ये सारी चीज तो जो भी है डेवलप्ड कंट्रीज एमिशंस के कारण हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज एमिशंस इज द रीजन। क्या गलत है? ये भी सच है, बस यही है कि रेडिकल अप्रोच है, इजंट इट? डिटर्मिनिज्म करके एक अप्रोच है, हम लोग जो पढ़ेंगे बाद में, ये कहता है कि नेचर कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना चाहिए हमको? हमको क्या करना चाहिए बताओ? क्या हम लोग वल्नरेबल सोसाइटीज को देख के छोड़ देना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक बोल के, डेवलप्ड कंट्रीज एमिशंस बोल के छोड़ देना चाहिए, नेचर कंट्रोल्स एवरीथिंग बोल के छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमको ये करना चाहिए कि क्या हम लोग दूसरा ये भी बोल सकते हैं, अनदर वन पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच करके रहता है, any technology needs टेक्नोलॉजी यूज करके क्या हम लोग सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं क्या? ये भी एक अप्रोच है। ज्योग्राफर एक्चुअली ट्रू ज्योग्राफर का अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर जब सुनामी और
when there is a coastal level flooding which might happen, definitely there would be vulnerable communities, there would be developing countries. Emissions is a reason. ये भी सच्चा ही है. डिटर्मिनिज्म नेचर कंट्रोल्स, वो भी सच है. और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसका इंपैक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी सच है. सच्चाई हर है. विच वन आर यू सीइंग, विच लेंस? दैट इज पर्सपेक्टिव. डिड यू गेट द पॉइंट? नाउ प्रीलिम्स एग्जाम हो गया. प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, वो भी एक पर्सपेक्टिव है. एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इतने साल से प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसे ही चल रहा है, अभी क्या बड़ा चीज आ गया कि सब लोग इतना बवाल कर रहे हैं? हाँ, इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? Why are they doing this huge criticism and all with respect to the newspapers? With respect to the latest prelims exam. सालों से भी UPSC is known for such kind of nature of the exam. That is one approach. The other approach says that one approach says that you as an aspirant, you have to understand this, identify the vagaries of UPSC and align accordingly. दूसरा ये कहता है, अरे अगर टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो इतना फालतू क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं ये है टेक्निक, कुछ लोग बोलते हैं ये. लेकिन सच्चाई एस्पिरेंट क्या करना चाहिए? हमारा काम क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में एक चीज है कि हमको जो टॉपिक्स पढ़ना चाहिए वो पढ़े, वो पढ़ के एग्जाम जाइए, वो सही तरीके से स्टार्ट अप्लाइंग देम एंड होपफुली वी क्लियर द एग्जाम. दैट इज योर वर्क एज एन एस्पिरेंट. कौन सा क्वेश्चन कितने क्वालिटी में आना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि नहीं, दैट इज द वर्क ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एजिटेशन करना चाहिए, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए. अगर प्रोटेस्ट करके छोड़ दिए तो फिर काम पढ़ाई कौन करेगा? Once again, there is a multiple viewpoint. Will you go for a protest or will you do your own thing? Maybe I would say we as a society should create enough pressure with UPSC. Maybe that is the work of faculties and institutions with taking care of the people at hands. Whereas at the same time, you see that there are other things also which need to be taken into consideration. So, for the UPSC, there has the responsibility for them to recruit the best talent of the country. You as an aspirant, you have to adapt with respect to the changing nature of the question paper and come out of it. That is what I would say. All perspectives are true. Am I right, all of you? Am I right on this? In a way, I would say that perspectives overall are nothing but, for me, perspectives are like GS4 ethics. So, what is perspectives for me? Ethics paper. Theory and applications. Theory and applications. This is what I would be saying it. Right? जैसे GS4 में एथिक्स के बारे में हर टॉपिक पकड़ के, हाँ, you identify the definitions, you identify the examples, right? For example, you have all those dimensions, no? What do you mean by empathy, compassion, impartiality, neutrality? सारे डायमेंशंस है आपके पास, उसके बाद सारे चीजें आप कन्वर्ट करते रहते हो. हाँ, that is what you need to see. So you understand one particular dimension of a question of the ethics and you start applying from different perspectives. That is what you need to understand. Right. Then, so before we discuss about the
entire theme of geography, okay, I will give you something about an overview of evolution of geographical thought, which will help you to understand all the dimensions in the upcoming days. हाँ, अगर आपके पास see, there, I think you all have a book about this, Geographical Thought by Majid Hussain. Do you have this? Geographical Thought by Majid Hussain. ये बुक पढ़ सकते हैं. कुछ लोग आरडी दीक्षित करके एक बुक रहता है, वो बुक पढ़े, या कुछ लोग ना सुदीप्ता अधिकारी करके एक बुक है, वो बुक पढ़ सकते हैं. कोई एक बुक पढ़ाई करो पहले, मेरा क्लास नोट्स एंड वन मोर बुक. सो you can buy a simple easy way of understanding is Majid Hussein's Evolution of Geographical Thought. You can buy the latest edition available in the market, or you can go for R.D. Dikshit's Geographical Thought book. Either of it, not both. हाँ, presently not both, क्योंकि पहले जो है वो खत्म पढ़ना चाहिए, बाकी उसके बाद वैल्यू एडिशन, right? So either of this you tend to you can buy for it, right? Now let us start this. Evolution of geographical thought. ओवरव्यू, थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाकी का डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दिस? इट इज ए स्टोरी. ज्योग्राफिकल थॉट मतलब क्या है? इट इज ए स्टोरी ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज, नॉलेज, पर्सपेक्टिव्स which has evolved all the way from the Romans to the contemporary era of 2026. Entire thing, right? All thoughts, ideas, and all. What is this? Story of geographical thoughts, ideas, knowledge, story. It's a story of all these dimensions, all the way from Greco-Roman period to the contemporary era. To the contemporary era. थोड़ा हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, आपको ओवरऑल व्यू आ जाएगा, उसके बाद हम बाकी सब डिस्कस करेंगे. Am I clear, all of you? Am I clear on this? Right? So there was a person by name Richard Hartshorne. You will study about his contributions later on. Richard Hartshorne. Richard Hartshorne. So 1939, sorry. Okay. It's a very, very important person. Richard Hartshorne. In his book Nature of Geography 1939. In his book Nature of Geography 1935. He written a book called Nature of Geography 1939. अच्छा, ये चीज याद रखना, ए बुक्स, these are the Bibles of that approach. तो always over the period of next 10 days जो भी एक टॉपिक के बारे में विडाल डी लैब्लैश अगर ये कहता है कि where did he say, in his which book mention such words,
that will help you. These are what we call it as major scholars, their books you have to prepare. So one keyword, major scholars, their work and their books. It adds value in your answers. Authenticating factor. ऑथेंटिकेट स्पेशली पर्सपेक्टिव्स में, पर्सपेक्टिव से अप्लाई कर रहे हैं ना तब जाके उसका बुक जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव आंसर लिख रहे हैं ना, यू ट्राई टू गिव यू दिस बुक्स एंड ऑल, इट विल वैल्यू एडिशन. सो इसको तो रट्टा करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, राइट? ये चीज तो फैक्ट है. अच्छा, वन थिंग, व्हेन यू ऑल लिसन टू दिस वर्ड कॉल्ड रट्टा मारना, हमेशा आपको क्या करते हैं लोग, क्या कहते हैं? इज इट गुड और इज इट बैड? रट्टा मारो. अगर मैं कहूं आज रट्टा मारो, तो आप ये क्या पर्सपेक्टिव से लेके जाएंगे, गुड और बैड? हमेशा आज के जमाने में इट इज टेकन एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ बैड. एम आई राइट? व्हाई बैड? हमको ये लगता है कि जिसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ओनली दैट पर्सन कैन बाय हार्ट द फैक्ट्स एंड एबल टू रिमेंबर. बट द रियलिटी इज you need to have conceptual clarity, there is no doubt. लेकिन conceptual clarity को facts अगर आपके पास है ना, वो enrich ही करेगा. इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस पॉपुलेशन रेशो रहता है. इतने लोगों के लिए कितने पुलिस है? फॉर एवरी 1000 पीपल हाउ मेनी पुलिस डू वी हैव? For every 1000 people, how many schools do we have? What is the distance of kilometers we are having from a person who is traveling towards a nearby hospital? अगर इन जनरल कहूं कि पॉपुलेशन में यहां पर पुलिस फोर्स कम है, यहां पर लोग ज्यादा किलोमीटर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, दैट इज द ट्रूथ. अगर हम लोग एक हैं कि the people are traveling for 8 kilometers to reach their school, you are adding value more. ये रट्टा मारना होता है 8 किलोमीटर्स का. ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में नहीं, it is enhancing concepts. So there are certain facts like that. Similarly, in perspective, these are facts. There are some kind of enhancing things, right? There is nothing to explain. So Richard Hartstone in 1939, there is a book called Nature of Geography. ये याद रखना चाहिए आपके पास बस. रैट्जेल एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो बुक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको, राइट? So what did he do? He identified different phases of geographical study. He identified what? Different phases of geographical study. Now, यहां पर फेज 1 होता है. Phase 1, or we can say this is nothing but phases of classical antiquity. Phases of classical antiquity. So what is this phases of classical antiquity? Anyone, can you tell me? Can you tell me what is this phase of classical antiquity?
What is this phase of classical antiquity? Nothing but early phase, the study of Greco-Romans. It's a long period of history, long period of cultural history around the Mediterranean region, Romans and all, the Greeks and the Romans, in various locations around the Mediterranean Sea. Around Mediterranean Sea, the where we are discussing the civilizations of Greeks and Romans. That is civilizations of Greeks and Romans. Right. You can see that it emerged around 8th to 7th century BC. Emerged around 8th to 7th century BC. And it is there until around 500 AD, 5th century AD, until around 5th century AD. It was also a time of Greeks, Chinese, Indians have also dominated. Greeks, Chinese, Indians, and at the end, Romans. Everyone have contributed, right? It was the era of great advancement of scholarly work, great advancement of scholarly work, great advancement of scholarly work. Right. So, for example, ancient scholars, Plato, Aristotle, Ptolemy, immense influence of Western thinking even now. Ancient thinkers of Plato, Aristotle, Ptolemy, you have immense thinkers even now. Immense impact on Western thinkers, even अभी भी, आज भी हम लोग कह सकते हैं. Voyages and new discoveries have enlarged their data. Note down this point. Voyages and new discoveries have led to a new understanding. Greeks understood, or what can I say? They have studied multiple theories, multiple societies. They have gathered knowledge from all other civilizations. They have gathered knowledge बाकी सारे civilization से, from all civilizations, and they started appreciating and developed further through their observations and developed them further.
through their observations. Through their observations. For example, primarily they are most of them were deterministic in nature. हम लोग ये कह सकते हैं वो लोग डिटर्मिनिस्टिक नेचर. डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है nature controls everything. Nature controls everything is what we call it as determinism, right? They are primarily determinism's nature. Their remarkable contributions are primarily from mathematicians, historical, physical, regional geography. They are mathematicians, historical, and regional geographies. Mathematics मतलब याद आया था. When you are a kid, you have been told that you need to by heart the tables. Am I right? Am I right? Tables. Second table, third table, fourth table. Two twos are, two fours are, two fives are, two tens are. By heart करने बोले थे ना बचपन में. Why? Mathematical problems to solve करना है तो फिर definitely these tables are at the core. Am I right? To solve the mathematical problems, tables are at the core. Yes. Similarly, geographical thought is also the same. That's why we need to study them in detail. So that is also we can say so. Okay. So geographical perspective is like that. Okay. Then this was reached at zenith. Eratosthenes, one of the main father of geography, which we consider as Eratosthenes, main person. Eratosthenes. His contributions. Eratosthenes. He was the first person to invent the discipline of geography. First person to invented the discipline of geography. Discipline of geography. First person to calculate circumference of the earth. His circumference calculation was very close to the present measure. First person to calculate circumference of the earth. He also has understood something about the tilt of the earth's axis. Tilt of the axis. In fact, his work has led to the development of the grid network of meridians and parallels. That is longitudes, meridians,
and latitudes. The grid network has helped in developing a world map further upon based on his work only. The grid network which he has helped has led in terms of meridian and parallels, which led to establish the incorporate the world map by the scholars. Scholars incorporated these and developed world map. That's what we called as Eratosthenes. अच्छा, एक चीज, why do we call it as longitudes as meridians? क्या आप जानते हो? Why do longitudes are called as meridians? Are you aware? Why do longitudes are called as meridians? Because they are used to calculate time zones, says Vagisha. No. Meridians are not that so. मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे. अगर एक लॉन्गिट्यूड है ना, if you see this, if this is the globe, agar this is the longitude, now any place on this longitudinal line, they will be having midday at the same time. इसीलिए उसको मेरिडियन कहते हैं. Longitudes are vertical lines. These vertical lines, they are called as meridians because all the points or all the places on the line, they have midday at the same time. That's why they are called as meridians. Midday at same time. That is the reason. Okay. So definitely, the Eratosthenes' work is very important. Right. Then you see here Romans. There are so many other Greco-Romans. Other ones. We will discuss them further. Aristotle, Ptolemy, did we have also have contributed significantly. Aristotle, Ptolemy, and all. Then there was a person by name Homer, Homer. Homer, Homer. Greeks consider Homer as father of geography. He is the first person.
He is the first person who is considered as the geographer, or you can simply say first geographer. That's the right word. First geographer. Right. Then you find Anaximander. 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 He was the first cartographer to produce the first world map to scale at that era. Cartographer produced world map to scale. Cartographer, world map to scale. Then you find Herodotus. Herodotus, father of geography, father of history, we consider him, right? Herodotus, father of history, developed historical geography. डेवलप्ड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी. अच्छा, एक चीज, अगर आपको हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस समझ में आना ना, मैं एक बात बोलूंगा अभी. नक्सलिज्म. नक्सलिज्म देखो, अभी सीधा नक्सलेट एरिया के बारे में हम लोग बिना कंटेक्स्ट पढ़ लिए ना, क्या होता है, हमको ये सोचेंगे कुछ एरियाज में रिसोर्सेस है, गवर्नमेंट रिसोर्सेस को यूज करके कुछ मिनरल्स वगैरह बनाने चाहता है डेवलपमेंट के लिए, और वहां के लोग ना उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, and they are using force into their control, and that led to something called as वायलेंस. अगर वायलेंस ले लिए तो फिर तब हम लोग ये बात बोलेंगे कि वो नक्सलाइट है. बात तो सही है. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग वायलेंस, व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ, कुछ लोगों के ऊपर वायलेंस के कारण कॉमन मैन ही मर रहा है, तो फिर नक्सलिज्म का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. बात तो सही है, लेकिन इफ यू स्टडी डीपर, इतने प्रोटेस्ट क्यों रहता है ट्राइबल एरियाज में? मैं बोलूं, हिस्टोरिकल फैक्टर, टाइम के फैक्टर से, हिस्ट्री से वही चीज होता जा रहा है. सेंट्रल बेल्ट ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया, जहां पर हम लोग कौन सा रेस के लोग हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस के लोग, ट्राइब्स है ना, जो भी सेंट्रल इंडिया में जो भी ट्राइब रहता है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का रेस है. These are one of the first immigrants to India, no, after the Negritos. तो ये लोगों के कारण, ये लोग के क्या हुआ, जब द मेन रेशियल ब्रांच ऑफ इंडिया, द मेडिटेरियन लोग आने, अभी का जमाने के रेस के हिसाब से लोग देखें, हम लोग मेडिटेरियन ब्रांच ज्यादा है. अगर ये मेडिटेरियन ब्रांच के लोग रेस तब आ गया ना, दे आर द वंस हु पुट प्रेशर ऑन दिस प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, उनको और नीचे इंटरनल और पीछे दबा दिए थे, और ये लोग कंट्रोल कर चुके थे. उसके बाद आए थे नॉर्डिक्स, नॉर्डिक्स कंट्रोल किए थे. ब्रिटिशर्स आए थे, वो लोग कंट्रोल किए थे. मतलब अगर प्रेजेंट जमाने का नक्सलिज्म समझ में आना है, तो फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ हाउ दिस ट्राइब्स हैव ऑलवेज बीन शोन दैट कुछ तो हम लोग आपके लिए करेंगे करके, इतने सोसाइटी सालों से वो लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ किया नहीं, उनको एक्सप्लॉइट ही किए हैं. तो फिर क्या मैं कह सकता हूं अभी के जमाने में गवर्नमेंट आके ये कह दिया तो फिर तुरंत मान लेंगे वो लोग?
बिल्कुल नहीं ना. This is what we can say a historical factor. Did you get my point, all of you? Have you understood this? Have you understood this? Right. Right. So this is what they have done. Historical geography and हेरोडेटस का इस काम ये था. और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि you can also note down this example I have given right now. Tribes in central India, why do they protest? History. They are proto-asteroid race. This race was exploited by the next race, Mediterranean race, Nordic race. सारे के रेस के लोग क्या कहते हैं? They have pushed them more deeper into interiors. Britishers also have pushed them deeper interiors. Britishers have also have exploited. So all these are also the factors. उसके साथ साथ हेरोडोटस का दूसरा कंट्रीब्यूशन हाँ, एक चीज याद रखना, they are definitely we are not here supporting the humanistic angle here. We are telling you a tribe how it is seeing. हाँ, नक्सलिज्म में ये बात भी सच है कि the very common man to which they are fighting for is been negatively impacted by the violence. डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो लोग और भी पीछे हो रहे हैं. And the same people whom they are claiming that they are fighting for are negatively impacted. वो भी एक चीज है, right? So that is there. Right. Herodotus, he also gave recognition to humans or gave recognition to humans in approach to geography. मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का ह्यूमन पर्सपेक्टिव, फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर पढ़ना. बिकॉज मोस्ट ऑफ द Greeks, Romans and all, they are mathematician, historical, regional and they are also physical in nature. So he was the first person to study from the human perspective, Herodotus. So see it from that. Then Plato and Aristotle started a philosophical approach in geography. Plato, Aristotle started philosophical approach in geography. देखिए, हम लोग जो भी आज और ऑलमोस्ट टुमारो जो भी डिस्कस करेंगे ना, हम लोग एक बेस बिल्ड कर रहे हैं. उसके बाद से जो भी डिस्कस करूंगा ना, सीधे आपको क्वेश्चंस में आएंगे. आज का जो भी डिस्कशन है, क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे. वी आर जस्ट बिल्डिंग द बेस विच यू गोना अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट इज देयर. So these are all the things are there. So why are we studying about these scholars is
all these ancient scholars, they are the foundations of modern knowledge. They are the foundations of modern understanding because modern developments in sciences were inspired from them. Foundations of modern developments of science. These are the foundations of modern developments in the science. We will discuss some dimensions further also, right? एक चीज है, this is what we call it as the phase of classical antiquity. Right. उसके बाद होता है the next phase, the dark age of dark age for Europe. Dark age for Europe. पहले का थ्योरी कहाँ तक आया था? If you study the first phase, it was until 5th century AD. If you see it, 5th century AD. Dark age started from somewhere around that for Europe. At this point of time, 6th century AD, right, after the collapse of the Roman civilization, until to the period of Renaissance. Especially for Europe, collapse of Roman Empire around 5th century AD. So until from the collapse of the Roman Empire until the age of Renaissance. Renaissance कब आया था? Somewhere around 13th to 15th century in Europe. हर जगह का अलग अलग समय है within Europe, somewhere at that point of time. Dark age के समय you hardly find any contributions here because this was the era where the church was dominant. Everything was religious, right? Everything was religious, right? You'd hardly find any kind of scientific inquiry. Church was dominant. Religious approach was dominant. You see that no scientific temper which was developed, no promotion of scientific inquiry, no promotion of scientific inquiry. You see that there would be laws against religion which are discarded. The blasphemy and all used to be very, very dominant. अगर कोई भी चर्च के ऊपर कुछ बोलेगा तो फिर उसको तो निगेटिव भी होगा. जैसे हम लोग अभी के कुछ फंडामेंटल सोसाइटीज में देखते हैं आज भी, जैसे इफ यू से एनीथिंग अगेंस्ट देम, they use the religion as a pretext for their benefit. You tend to find that, right? That's what you tend to find that. So there is no signs of scientific thinking at this point of time. But if you see it here, India and China are doing something, but it was not regarded as a significant achievement during this era, right?
So at this time of time, contemporaries in यूरोप में तो डार्क एज है. इंडिया एंड चाइना, some developments have occurred, no doubt, but they are largely considered not so influential. This is there. दूसरा एक अप्रोच है, इसी के जमाने में अरब्स, the Arabs have contributed very, very significantly. They have dominated this era. They became powerful and they controlled significantly. They became powerful in knowledge and in politics. They are also voyagers, travelers, studied across the world because they moved as part of the trade. They are also voyagers, traveled. अच्छा, एक चीज है, हमेशा whenever you study about Arab and all, do you find that always we tend to see that they have been medieval का इरा के जमाने में अरब में बात करेंगे तो फिर they always fight about a magic book. Am I right? Magic book. टॉलेमी एंड ऑल जो भी बुक्स लिखे थे ना, एक्चुअली क्या है ना, मैजिक बुक में, बुक में कुछ मैजिक नहीं है. ये लोग क्या किए ना, जो भी ग्रीक्स रोमन्स के अप्रोचेस के बारे में जो भी नॉलेज था ना, वो नॉलेज, एंड दे आल्सो दे आर नोन फॉर एक्चुअली व्हाट, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट नॉलेज. दे आर नोन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट नॉलेज. वो नॉलेज जो भी है ना बुक में है, इसीलिए वो बुक मैजिक बन गया. आपको याद होगा, आई थिंक, आर यू कनेक्टिंग ऑल ऑफ यू? So their primary contribution is preservations of the ancient knowledge. Number of books have been translated into Arabic and Persia. So all the books, Ptolemy जो भी book लिखा है, Aristotle जो भी book लिखा है, they have been translated into Arabic and Persia, not Odisha. Arabs में क्या लिखे थे? Number of books translated to Arabic and Persian. वही चीज है, मैजिक बैंड बन गया, मैजिक बन गया था. उसके साथ साथ वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन किए थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग कंट्रीब्यूशन नहीं किए थे, राइट? दे हैव मेजरली कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, simple, desert area, clear skies, astronomical contribution. So उस जमाने में the Arabs contributed to astronomy. Why? Simple, desert areas, so naturally they have contributed to this. So you have clear skies, and these, because of the clear skies and all,
वहां पर रहना बहुत आसान है। तो इसके कारण आप लोग ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द क्लियर स्काइज इन द डेजर्ट्स एंड ऑल, they have contributed to astronomical. So this is one of the contribution you have. Then if you see Al Masudi, he is one famous geographer here. He has studied Indian monsoon. You have Ibn Battuta, right? The next one, Ibn Battuta. He's also one major contributor, right? Then you see another one, Al-Biruni. Al-Biruni contributed to humanistic subjects. Contributed to humanistic subjects. Right. So this is the thing we will discuss about further. We will discuss about Ibn Khaldun and all those people later on and all. So this is the second phase. Then we'll go to the next one, age of European Renaissance. European Renaissance. So यहाँ पर क्या है? चर्च का रोल कम हो गया. Now beginning of the scientific inquiry in Europe. Beginning of scientific inquiry. Beginning of scientific inquiry in Europe. Also promoted by rulers and monarchs. Also promoted by rulers and monarchs. Promoted by rulers. This is what is the age of discoveries which has happened across the world. Age of discoveries. It is growing economic ambitions of rulers to discover a new route towards India and other countries. New sea route to India and other countries. यही है उस जमाने का एम्बिशंस, और उसी के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी आए थे. So that led to the next phase, which we call it as the age of voyages and exploration. Age of voyages and exploration. So this led to a new phase. Age of voyages and explorations. यहां तक क्या है ना, अभी तक जो भी है ना, सबका दिमाग जो भी चर्च के कारण दब गया ना, वो अभी बाहर आने लगा. That is the beauty of this era, right? So it led to a faith in increase the human's capabilities of doing rather than religion, right? So it led to the Renaissance, rather, whatever the Renaissance has happened. So you can say Renaissance
have bought the faith in humans' capabilities. That's what is age of voyages. Lots of maps were drawn. Discovery of the world map. So lots of maps. Cartography work बढ़ गया था. Discovery of new routes. World map was understood by now. And you also say that new tools of exploration and map making. New tools of explorations. ये सारे चीज हुआ था. Development of new instruments, new tools, such things. That is where you can say Spanish and Portuguese went to South America. Spanish and Portuguese, South America. You can say that. You can see the Vasco da Gama to India. Vasco da Gama to India is also the same time, right? Identification of British moving towards New Zealand, India, Australia. That also started at the same time. British to Australia, New Zealand. So all these things have happened during the age of Renaissance. That was the era. Right. Then the next phase, the phase of pre-classical era. Phase of pre-classical era. Pre-classical geography, 1600s AD. Phase of pre-classical geography, 1600 to 1700 AD. Bernhard Varenius. Bernhard Varenius. Bernhard Varenius in 1650s. Immanuel Kant. In 1750s, they are one of the major contributors. They also have made, along with the Ptolemy and Aristotle, philosophical foundations for geography. Philosophical foundations of geography. Then phase 6. In fact, sorry, इसके साथ साथ ही they made geography as a discipline possible. Geography एक यूनिवर्सिटी के तरफ में एक डिसिप्लिन जैसा रह सकते हैं करके they have made it also possible. Varenius and Immanuel Kant. Geography as a discipline. So their main contribution is this: it is possible. ये है phase of pre-classical geography. Then comes the phase 6. Phase of, or the age of classical geography. Age of classical geography.
यहाँ पर आपको दो लोग मिलेंगे, Alexander von Humboldt and Carl Ritter, contemporaries, where they have established a geographic scientific study. So you can say that early 1800s, Alexander von Humboldt and Carl Ritter, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, राइट? Contemporaries, very very important. Right. They have established geography as a modern scientific study. Established geography as modern scientific study. अभी तक जो भी है ना, you haven't seen any kind of theories so far. So far, whatever the things you have seen, that there are approaches, no theories, no methodologies. So until now, so far, there were no theories in development of a science, no methodologies in development of a subject. What methodology, what approach and all, nothing. They are just some approaches. But the things have changed after this. This is what we call it as perspectives and models in geography, the 1930s and debates. The next one is what is called as the perspectives in geography. Modern period, post 1859. Perspectives in geography. कितना हुआ? 6 हुआ ना, 7th ना, कितने हो गया अभी तक? 6, right? Then the 7th one, perspectives in human geography. Perspectives and models in geography. Perspectives and models. This is what I can say, the beginning of dichotomy. The beginning of dichotomy. Beginning of dichotomy and dualism. हम लोग कल डिस्कस करेंगे डाइकोटमी का मतलब क्या होता है, ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है. When there is a division or contrast between two things, dichotomy. Dualism का मतलब है two ideas, two perspectives, right? That is what is called as dualism. Dualism. When the world is split into two parts, dualism. Dichotomy, when we simply say that there is a contrast in the approach. Right, so that is what you can say. So here we'll be discussing about multiple things later on. डाइकोटमी एंड ड्यूअलिज्म में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा. क्या ज्योग्राफिकल अप्रोच फिजिकल ज्योग्राफी में होना चाहिए और ह्यूमन ज्योग्राफी में होना चाहिए? कौन सा पढ़ना चाहिए? वो भी चीज है, राइट? फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी.
should we take the environment as a major prospect of human geographical approach, or human beings have the ability to change the human geography? देखियो मतलब क्या है? If you study the geography from the perspective of geomorphology, climatology, oceanography, that is physical geography. You study population, economic geography, cultural geography, population, political geography, and all, that is human geography. But how to approach human geography? Should environment is the one which controls the humans, or humans are the ones which are having an impact on the environment? वो है environment versus man, right? मतलब now there is no debate about human geography. Human geography है, human geography को कैसे अप्रोच करना चाहिए, environment versus man है, वो है दूसरा डिबेट, right? That is what we call it as the debate. इसी के एनवायरनमेंट वर्सेस मैन में ही आपको डाइकोटमी रहता है, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म. वो एक डिबेट है. दूसरा एक डिबेट है systematic approach versus regional approach. Systematic study, regional approach. We will study that further tomorrow. Systematic versus regional approach. Systematic versus regional, right? Then धीरे धीरे, by the time we came to around 1930s and 1940s, we have understood what will be the scale, and by the time 1930s and 1940s came across, we started questioning geography. What is the scale? What is the approach? What will be the scale, and what should be the method of this approach? That is what has approached. Scale and methods. Scale and methods. That's where we have seen that regional geography versus systematic geography has become much more dominant. Regional versus systematic, that has become much more dominant. इसका मतलब क्या हम लोग डिस्कस करेंगे. Then we see the revolutions post World War II. Quantitative phase. So कहाँ तक आया था? 7 ना 8. Quantitative phase in 1930s. Sorry, not 1930s, 40s. 1940s and 1950s. ये है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मतलब लॉट्स ऑफ मॉडल्स वर डेवलप्ड. Models, Wantanenka, agriculture, location and all, Weber theory, lots of models. Right. Now, their ideas in the process, quantitative revolution में lots of theories and models developed करने के कारण, you have seen that there were normative in nature, simplifying as assumptions like rational man. They have simplified. हमको क्लास डिस्कस किए थे ना सेंटर प्लेस थ्योरी के समय, वो क्या बोलता है? आइसोट्रोफिक सरफेस बोलता है. मतलब जो भी सेंटर प्लेस का थ्योरी है ना, थ्योरी का पूरा एरिया सिमिलर है, हाँ, एंड जो सेंटर प्लेस का थ्योरी से
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड हेवी लॉ सेटलमेंट्स के लिए, सर्विसेज के लिए वो क्या करता है? ही कंसिडर दैट मैन इज अ रेशनल मैन, ही कंसिडर दैट मैन इज रेशनल, और इसी के हिसाब से लोअर ऑर्डर सर्विसेज सर्विसेज के लिए पास में लग जाता है, हायर ऑर्डर सर्विसेज के लिए दूर जाता है। वो है रेशनैलिटी बात किया था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, हम लोग डिस्कस किए थे, अगर समोसा एक दूर के जमाने में शॉप में अच्छा है तो फिर हम लोग 10 किलोमीटर वो समोसा खाने के लिए जाने के लिए हम तैयार है, बगल में जो समोसा मिलेगा वो नहीं खाएंगे। तो रेशनैलिटी नहीं है, कभी 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 सिमिलर नहीं है, multiple viewpoints, multiple observations, right? That is what we call it as critical revolution, that is what we call it as quantitative revolutions. Dynamic behavior of human को अप्रोच नहीं किए थे, it could not recognize the dynamic nature of human. इस फेज को क्रिटिसिज्म करते करते that came the next phase, the behavioral approach, the critical revolution, 1950s to 80s. (1950s to 1980s) arose due to critique against quantitative revolution. Against quantitative revolutions, two approaches have been very dominant: behavioral, there is humanistic approach, and there is also another approach called as radical approach. All this came as a criticism against quantitative revolution, right? So that is the idea. So behavioral approach में क्या है? See, ये लोग क्या कहते हैं? They are in favor of man. Sorry, they are in favor of theories. But recognize the dynamic nature of man. इसीलिए बिहेवियर अलग होता है, तो फिर मैन भी, ह्यूमन बीइंग्स आर डाइवर्स अक्रॉस प्लेसेस। यहां पर है हम लोग दिल्ली में, हम लोग कैसे हैं? अगर दिल्ली से अगर पहाड़ में रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? आइलैंड में रहेंगे, वी एज अ पर्सन विल चेंज, नो? सेम पर्सन, सेम ह्यूमन बीइंग, इफ यू स्टार्ट लिविंग इन विलेज, इफ यू स्टार्ट लिविंग इन द सिटीज, you start living in the mountains, पहाड़ में, and you start living in the islands or near to the ocean, क्या मैं कह सकता हूं हमारा अप्रोच नेचर के हिसाब से अलग रहेगा? राइट? एम आई राइट ऑल ऑफ यू? दैट इज व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियर को वैल्यू दिया गया था, राइट? यहां पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमन, गिव फेवर टू ह्यूमन, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, नो जनरलाइजेशन, every human is unique, value humans, no generalization. इसी के साथ साथ रैडिकल अप्रोच भी है, हाँ, वो लोग भी कहते हैं कुछ अलग व्यू पॉइंट्स है उनका भी, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, रैडिकल अप्रोच एंड ऑल। Are you following, all of you? Following all the viewpoints?
right? All these things have come across. धीरे धीरे you have been some more approaches. So radical approaches is Marxism, social views, right? वो है radical approach. उसके साथ धीरे धीरे और एक अप्रोच डेवलप हुआ था, वो है the next approach, which we call it as welfare approach. Welfare approach, radical approach. So we can categorize this. So there are other approaches like welfare approach, where welfare of the humans is taken into considerations, right? So some people say that radical and welfare are can be clubbed together. Those things are there, right? So then we have seen the late 80s to 90s crisis phase. So last one, if you understand, late 80s to 1990s क्राइसिस फेस, जिसके कारण 3 चीजें डेवलप हुए थे. एक फेमिनिस्टिक व्यू पॉइंट, एक होता है वेलफेयर अप्रोच, एक होता है एनवायरमेंटलिज्म अप्रोच. मतलब दिस इज द पोस्ट क्लासिकल इरा. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द पोस्ट क्लासिकल इरा, पोस्ट मॉडर्न जोग्राफर्स. Now all these kind of things are there. Everything has moved across and environmentalism has turned into a major theme, major approach. Remaining all have faded away. Religion जैसा, you will be always finding there are phases in geographical approach. एक पैराडाइम बोलते हैं, सब लोग उसी के पर्सपेक्टिव से देखते रहते हैं. जैसे वो पैराडाइम खत्म होता है, न्यू फेज, उसके ऊपर क्राइसिस आएगा, उसके अगेंस्ट न्यू पैराडाइम आता रहेगा विथ न्यू आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू मेथोडोलॉजीज. रिलीजन भी वही काम करता है. व्हेन यू हैव सीन, लुक एट हाउ बुद्धिज्म हैव कम अक्रॉस. बुद्धिज्म वाज डेवलप्ड और वाज क्रिएटेड आउट ऑफ द नेगेटिव्स व्हिच वी हैव सीन एट द टाइम ऑफ द कल्चर्स देन, जो हिंदुइज्म करके एग्जैक्टली बोलते नहीं है, बट एज the way we live is called as Hinduism, and all the rigid practices and all have led to the growth of Buddhism. बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बुद्धिज्म डेवलप होते होते वो लोग भी the ideas of the same ideas have been incorporated. जैसे पहले they are against the idols, बाद में क्या हुआ, बुद्धिज्म में भी idols आने लगे, right? Christianity, it emerged out of Judaism, right? And you have seen that, I think, am I right? And you have seen that as Christianity has evolved and all. पहले जब इस्लाम आया था, इस्लाम was considered as much more liberal, much more progressive initially इस्लाम, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम में फंडामेंटलिज्म आ गया. What is happening? There is a phase that approach becomes dominant, and धीरे धीरे that approach में questions आ जाएंगे. You will see corruption. See, चर्च में भी क्या हुआ था, चर्च का फेज बढ़ गया था, पावर आ गया, अकाउंटेबिलिटी कम हो गया, करप्शन हो गया, वही लोग कंट्रोल करते रहेंगे. लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करने के बाद रिनाइसेंस आया. नाउ रिनाइसेंस, मॉडर्न डिस्कवरी में फेज चेंज हो गया. लाइक दैट हियर आल्सो यू टेंड टू फाइंड. सो दीज आर ऑल द अप्रोचेस व्हिच आर देयर in the perspectives, and we will study each one over a period of time. आपको समझ में आया? all of you, did you get my point? All the approaches. Yes. How is perspectives? Interesting? Can I say that perspectives is interesting?
right? So these are the things we will try to understand. We will try to see tomorrow. So remaining aspects we will try to see tomorrow. That's it then, all of you. मजा आया? मजा आया ना? अच्छा ये बताओ, क्या आप सो गए ये क्लास? Have you slept while listening to the class, or you have enjoyed the class? Tell me honestly. Have you slept or have you enjoyed the class? Tell me very honestly. समटाइम्स फिलोसॉफिकल अप्रोच है, कभी कभी ड्राई हो जाता है, ठीक है. बी ए बिट मोर एक्टिव, ट्राई टू मेक इट एक्टिव, because once you listen to the class, once you connect, it will be very easier, right? Okay, that's it then, all of you. Thank you, all of you. Take care. We'll see you again tomorrow, right? Thank you, all of you. Take care. See you tomorrow. एंजॉयड द क्लास, बट अब बहुत नींद आ रहा है, सेज पिंकी. नींद तो आएगा, हाँ, राइट, दैट इज द नेचर. चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू. टेक केयर. सी यू अगेन टुमारो.